Hello, students, and welcome back to your online classes. I hope you all had an amazing summer vacation and relaxed, recharged, and ready for your studies now. So, today we are going to start Chapter 5 Rocks and Minerals. So, what do you know about rocks? You must have seen there are a lot of stones lying on the roadside, right? आपने बहुत सारे रोड के आसपास पत्थर देखे होंगे, right? They're also used in making houses and roads and lot of stuff. Okay, you may have also seen big rocks in mountains or near rivers. Have you ever wondered कि ये सब कहाँ से आते हैं और ये सब कैसे बनते हैं? So, in this chapter, we will learn about types of rocks and minerals and what are the uses of rocks and minerals. So, as you all know that earth is made up of different types of soils and rocks. The top layer of earth is made up of rocks and soil. आपको पता है कि जो earth होती है उसकी जो top layer है वो किससे बनी होती है? Rocks और soil से. And what are rocks? Rocks are the solid structures which is made up of different type of substance. And what are those substance? These substance are called minerals. Rocks जो होते हैं वो minerals के बने होते हैं और minerals they are the substance which are found inside the rocks. Okay, so as you can see in this picture, this is the earth and इसके जो inside पे बहुत सारे layers हैं and what are these? These are rocks. Okay, these are minerals and these minerals they form what? They form rocks. So the solid part of the earth crust are called rocks. Okay, now we'll read that what are the types of rocks. So rocks कितने टाइप के होते हैं और ये कैसे क्लासिफाई होते हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वील रीड ओवर हियर. Okay, so rocks they are classified by mineral composition. रॉक्स के अंदर कैसा मिनरल कितना मिनरल मिलता है उस बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं या ये कैसे फॉर्म होते हैं या इनका टेक्सचर कैसा होता है. व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सचर कि इसको टच करने पर हाउ डू यू फील. बहुत सारे रॉक स्मूथ होते हैं, बहुत सारे रॉक रफ होते हैं. उस बेसिस पे हम रॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज द igneous rock. The second category is the sedimentary rock, and the third category is the metamorphic rock. Okay, so we'll read about the igneous rock. Igneous rock, they are the oldest type of rock on the earth. इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस रॉक अर्थ का सबसे पुराना रॉक होता है. आपको जहाँ पे भी इग्नियस रॉक दिखेगा तो यू विल नो दैट दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रॉक. ओके, एंड इसको हम फायर रॉक्स भी कहते हैं. एंड वाई दे आर नोन एज फायर रॉक्स? बिकॉज ये अर्थ के अंदर से निकल के बाहर आता है. ओके, एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड वील सी. So as you can see in this picture, the magma or lava upon cooling solidifies into a type of rock called igneous rock. What do you mean by magma and what do you mean by lava? अर्थ के अंदर ओके जो टेम्परेचर होता है इट इज़ वेरी हाई. आप सबको पता है दैट द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इट्स वेरी हाई, इट्स वेरी हॉट. तो जो मिनरल्स होते हैं वी ऑल नो कि मिनरल्स कहाँ होते हैं? मिनरल्स अर्थ के अंदर होते हैं. तो जो मिनरल्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में मेल्ट हो जाते हैं एंड दे आर इन द लिक्विड फॉर्म. तो वो जो लिक्विड फॉर्म होता है मिनरल्स का दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज मैग्मा. ओके, एंड जैसे ही ये मैग्मा अर्थ सरफेस के बाहर निकल आ जाता है, कभी वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब सारे जो नेचुरल चीज़ें जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, बिकॉज ऑफ दैट जब जो मैग्मा है लिक्विड फॉर्म में जब वो बाहर निकल आता है अर्थ के तो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर कंपेयर टू इनसाइड आउटसाइड थोड़ा सा ठंडा होता है. तो ये जो लिक्विड है ये टर्न हो जाता है इनटू सॉलिड एंड देन दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म igneous rock. So as you can see in this picture, ये जो मैग्मा है ये बाहर आ रहा है और ये बाहर आकर ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं that this is what? This is lava and what it is formed? It formed igneous rock. Okay. So there are different type of igneous rock. The first is granite, then they are pumic, and then they are
basalt. Okay, so हम इसके बारे में भी डिटेल में we'll read it out. So the first one is the granite. The granite is the most common igneous rock. So as you can see in the picture, this is the granite and आपने बहुत सारी जगह पे इसको देखा होगा, like floors में, tiles में, बहुत लोगों के घर में granite लगा होता है. Okay, so these are what? This is igneous rock. Okay, and how the granite is formed? Granite is formed when magma cools slowly under the ground. ये कैसे फॉर्म होता है? जब ग्रेनाइट जब मैग्मा जो होता है, जब मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाता है, जब वो अर्थ सरफेस के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, देन ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड. ओके, granite are of different colors. It can be found in gray color, it can found in pink color, it can be found in deep red, and it can be found in black color also. Now we'll see that जो granite होता है, it's very strong and it's a durable rock. What do you mean by durable? जिसकी वो बहुत टाइम तक सही रहता है, एकदम जैसा आपने उसको रखा है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा. तो इट्स स्ट्रॉन्ग, इट्स ड्यूरेबल एंड इट कैन बी ईजिली पॉलिश्ड. ग्रेनाइट को हम बहुत ही ईजिली पॉलिश कर सकते हैं. ओके, बाकी सारे रॉक में शायद मे बी ये क्वालिटी ना हो, बट इन ग्रेनाइट पॉलिश की क्वालिटी होती है. ओके, now how are granite useful? Granite are used in historical monuments. As you can see, ये सब बनाने के काम आता है. It can be used in the construction of building, it can be used in tombs, road construction and pavement construction. यहाँ पर हम granite का यूज करते हैं. ओके, सो what is granite? Granite is an igneous rock which is very strong, which is very durable, और उसका यहाँ पर यूज होता है. ओके, now we'll read about the pumic stone. Pumic is a unique, light and porous rock which is formed when the molten lava cools very quickly. अब ग्रेनाइट और प्यूमिक में डिफरेंस क्या है? ग्रेनाइट तब फॉर्म होता है जब आपका जो मैग्मा है वो बहुत ही स्लोली कूल डाउन होता है, बहुत ही धीरे धीरे वो ठंडा होगा, देन ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड. एंड हाउ प्यूमिक इज फॉर्म? प्यूमिक फॉर्म होता है जब लावा जो है वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, देन प्यूमिक इज फॉर्म्ड. ओके, during this rapid cooling, gases get trapped inside it and then escape through the pores, thus making it look like a sponge with a small holes and pocket inside it. अब as you can see, यहाँ पर इसका जो texture है, it has holes in it. यहाँ पे बहुत सारे holes हैं, right? अब ये holes क्यों form हो जाते हैं? Holes इसलिए form हो जाते हैं क्योंकि ये जो रॉक है, ये जो प्यूमिक है, ये बहुत जल्दी कूल डाउन होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट जो गैसेस होती हैं इसके अंदर, वो इसी के अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, इसी के अंदर ही रह जाती हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके बाहर निकलती हैं थ्रू दीज पोर्स. ये जो छोटे छोटे इसमें होल्स हैं, दे आर नोन एज पोर्स. इसके थ्रू दे कम आउटसाइड, दस मेकिंग इट लुक लाइक अ स्पंज, और इसमें छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं. ओके, Pumic is porous and hence it can float on water. Pumic is the only igneous rock which can float in water. Okay, remember always this, that pumic can float on water. Okay, इसका color light gray or cream color होता है. And how are they useful now? They are useful in polishes, they are useful in pencil erasers, and they are useful in body scrub. Now we'll read about the second type of rock, which is sedimentary rock. Rocks that are exposed to the force of nature wear out over time. They are the sedimentary rocks. And sedimentary rocks क्या होता है? अर्थ सरफेस क्या होती है? वो कॉन्स्टेंटली इरोडेड होती रहती है. इरोडेड, व्हाट डू यू मीन बाय इरोडेड? कि जो सरफेस होती है, बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ विंड, अर्थ सरफेस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है. लाइक ऊपर एक लेयर हटी हवा से, तो जो नीचे की लेयर आपके एक्सपोज हो गई. ओके, सो ये जो बिकॉज ऑफ दैट जो हम उसकी वजह से जो रॉक फॉर्म होता है, दे आर नोन एज द सेडिमेंट्री रॉक्स.
So here, rocks that are exposed to the force of nature wear out over time, like wind, rain, hail, intense sun. So this caused them to wear out particle by particle. So as you can see in this picture, this is a stone. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर wind है, तो इसके छोटे छोटे जो pieces हैं ये इससे अलग हो रहे हैं. Okay, now what happened? These particles of sediment, they get carried away by wind and rain to rivers, lakes and seas, where they slowly sink down to the bottom and settle down in layers. ये जितने भी ये particles हैं, they just move down into the water bodies or to the rivers or to the lakes or to the seas, and over there they settle down. वो वहाँ जाकर थोड़ी देर में वो ऊपर रहते हैं, देन दे सेटल डाउन, वो नीचे सिंक हो जाते हैं, एंड फिर वो लेयर पे लेयर दे फॉर्म. ओके, so here you can see these particles or the sediment, they get carried away by wind and rain to rivers, where they slowly sink down to the bottom and they settle down. So as you can see, they are settling down. यहाँ पर ये आके in this picture they are settling down. The weight of the sediment on top squeezes the sediment in the lower layers, thus forming the rocks. So as you can see, the uppermost layer, they just squeeze the lower layer. ये जो ऊपर की लेयर है ये नीचे की लेयर को पुश करेगी, उसे दबाएगी, and then वो लेयर के लेयर पे लेयर वो फॉर्म होता जाएगा, and thus rock is formed. Okay. And these rocks are known as what? These rocks are known as sedimentary rocks, and most of the sedimentary rocks, they are formed under water. Okay. The weight of the sediment on top squeezes the sediment in the lower layers, thus forming the rocks. So ये जो नीचे वाली rocks है, they are known as what? They are known as sedimentary rocks. As the name suggests, these are the example. जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था that granite, pumic and basalt, those were the examples of what? Those were the examples of igneous rock. Sandstone is an example of sedimentary rocks, and they are the most common rock जो कि grains of sand या इनसे मिल के बनते हैं. Okay. Like as you can see, sand particles and rock grains, they both combine, and what do they form? They form sandstone. They contain mostly quartz grains and it is a soft rock. जो sandstone होता है ये बहुत ही soft rock होते हैं. Compared to the rest of the rocks, they are very soft. And in India, there are many famous historical buildings जो कि sandstone से बनी हुई है. Okay. So they are used in construction of the buildings and Red Fort. So आप में से बहुत लोगों ने Red Fort देखा होगा. So Red Fort is made up of sandstone. So next time whenever you see the Red Fort in any picture, just always remember that this Red Fort is made up of what? It's made up of sandstone. Okay. Now shale is also an example of sedimentary rock. It is formed from mud or clay. Like sandstone is made from sand, shale is made from what? Shale is made from mud or clay that has been pressed together for a longer period of time. Okay. It's a very fine grained sedimentary rock which is made up of clay and mud deposited as slit or river beds and at the mouth of the rivers. Okay. They are used in making shale tile, shale brick, shale pottery items. So ये सब बहुत ही useful और variety of चीज़ें बनाने के काम आता है. Okay, so till now we have studied about igneous rock, we have studied about sedimentary rock, what are the uses of igneous rock, what are the uses of sedimentary rocks, and what are their types. In next video, we'll study about the metamorphic rocks and minerals. So students, we have completed half of the chapter in this video. We'll complete the rest of the chapter in our video 2. So till then, what you have to do, you have to understand this chapter through this video and through the notes and through the book image which I have attached in the PDF, and you have to learn it also, and we'll continue in the video 2. Thank you so much, class.